Good evening, everyone, and hope you all are doing good and healthy and happy. I, Rima Sharma, is your host of today's meet, and by profession, I am a teacher as well as building this business very passionately and optimistically. So, on behalf of Calm Family, I welcome you all in this business opportunity. So, I would request one and all to keep your videos on. It will motivate us to become the diamonds soon. So, I wholeheartedly welcome our new invitees who took out time from their busy schedule and would request to sit with a pen and paper so that if they have any doubts, any queries, they may ask at the end of the session. And I also will get an opportunity to have a one to one discussion, to have a one to one talk with our mentors. So, now, not taking much of your time, let's welcome and invite our today's speaker, Mrs. Garima, who was an ex HR professional, and Pratyush sir, who is working in MNC now. So, can we have a big round of applause for our speakers? So, now taking to the session further, I would invite now Garima and Pritesh to take the session further. Over to you, Garima and Pritesh. Thank you, Rima. Thank you for such a wonderful, warm welcome. Good evening, everyone. Like Rima said, we are Pritesh and Garima Arora, and we are connecting from New Delhi with you all. I hope, I guess a lot of people are from Delhi, some are from UP and all over India. So we welcome you all. And as Rima said that I'm an ex-HR, we both are MBA professionals, right? And we have a daughter. So she's turning 11 in March. And, earlier I was working, definitely, as she said, I'm an HR professional. Yes, I was an HR consultant. But then this business came into our life. And it gave us a chance to, take a decision, right? Basically, it gave me a chance to take a decision between the job and business, and most importantly my daughter. I always wanted that I should be doing something where I can take care of her, because we put up in a nuclear family. Our parents are from Allahabad. So we always wanted that we should not sacrifice our child's time, right? So I was always looking out for an opportunity where I can work also, because when you have studied, right, when you are graduated or post graduation, whatever you say, you always want that you should have the thing that people should know you by your name, right? I was always looking out for that. When you are working, people know you by your name. Nobody knows that that's Pritesh's wife. But yes, Pritesh is working in his office. Everybody knows that this is Pritesh's wife. So I was looking out for something, some recognition for myself, right? So this business came into our lives, and we took, we saw this opportunity. I always thought that yes, maybe God has a plan, and that's why we got this business. And when we were shown this business, we were in Punjab, then we moved to Delhi, and then that was the time when we thought that yes, we have to do it. Right. So now Naisha is also a part of this business only because she has adjusted herself with that. She's always with us wherever we go, and nowadays we all have virtual meetings, so she's always with us. So I don't have to take tension, right? That what my child will be doing, how will I take care of her. That was the biggest thing for me. My dream, I can say my first dream was that I'm taking care of her and even doing something for myself. And today, many of you must have come here for the first time also. So I'll just say one thing, before giving it to Pritesh, that, just keep a supermarket approach, right? When we go to a supermarket, when you go to a big bazaar or you go to a Reliance, anywhere, right? So what you do, whatever you like, you take those things, keep it in your cart. But whatever you don't like, even someone is pitching you, you say, no, we are not interested for that, right? So just keep that supermarket approach. Whatever you like in this, in today's presentation, just keep it with you. But if you don't like something, just leave it here itself.
And with that, I'm done, and over to Pradesh. Thank you. Super. So good evening, everyone, once again. And you must have heard Garima and you would have thought it was the flyer which talked about Garima and who's the bald guy. Okay, so so the bald guy is the guy who's going to speak for a while because there's an opportunity to speak about something which we've experienced last couple of years. And yes, have a supermarket approach. You may like something and you want to keep it with you, but I hope you're intelligent enough to not let this be your last meeting or last interaction, just in case you've come for the first time. And you will be commonsensical enough to understand that these 80 plus people are not the only set of people who are part of this concept, this project, because what I'm going to talk about is globally a phenomena. And it's almost 70,000 crore concept I'm talking about. So definitely it has to be outside these 80-100 people. Okay, so I hope you stand that commonsensical enough. I hope you go through these 90 minutes of session entirely. I hope you reconnect with the person who brought you to this place, who gave you this Zoom link and said, okay, this could be for you. Okay, so take little more information. Your decision is accepted by us and the person who's invited you, both ways, positive or negative. But you got to see कि आपको देखना है कि how you will take an intelligent decision, because intelligent decision doesn't mean nodding yes. No बोलना भी intelligent होता है until and unless you get to know what you're saying no to. Okay, so like right now I have a cup in front of me, and you may be just seeing that's a hot cup, but you may get confused what is in the cup. There's nothing but hot water. Okay, because it's like good time to sip hot water instead of having regular water. So abhi kya hai mere cup mein, ye to mujhe hi pata hai. So somebody who's brought you here, they have something in store for you, so don't judge them. Okay, and because I'm trying to set the pace, because kya hota hai ki I also happened to land in one of such meetings some point in time, and it was a physical era. Okay, it was not a digital era, and बहुत कुछ नहीं समझ में आया था. There was a lot of doubt and confusion, and I was not very sure. But what I really liked was, and Garima and I, what we really liked was that the set of people were amazing. Okay, I had not seen couples together in a home talking about a business, and you can see a lot of couples. You can see a lot of couples, on the screen also. So smartly, sharply dressed. तो मैंने ऐसा देखा नहीं था पहले तो. I was like little skeptic, but a positive skeptic. So you also happen to be one. And then it could be for you. Okay, so I also understand कि हम लोग अभी जो भी कर रहे हैं, wherever we are in life, I'm sure we are doing good. Who all feel that they're doing good in life? Be honest. At least I feel, other than business, doing good. Now, good का क्या definition है? Good is that you have food on the table. Be thankful to Almighty. ऊपर वाले का धन्यवाद कि खाना खाने को मिल रहा है, and 3 time खा पा रहे हैं. I don't know how many corporate people have 3 times food, but and in time food, but still symbolically we are doing it. And what else? We are able to pay the bills and taxes. The child is going for a decent education. There is some insurance. Maybe you've got a big term plan. आपने एक अच्छा health insurance ले रखा है. Maybe 30-40 lakh रुपए का. You are well covered. You've got a decent car. Maybe EMI, without EMI. You may have your own house, maybe in a rented house, or you may have another house. उससे भी शायद कुछ income आ रही है, तो आप decent कर रहे हैं life में. We are not trying to impress you. You don't have to impress anybody. What we're trying to say is, the question is, whatever good I am doing or whatever good you are doing, क्या वो good enough है? Is that good enough? And whatever we are doing, whichever program में हम लोग हैं, whatever journey we've been going through, is my child going to do the same thing? नायशा भी क्या वही करेगी, या मैं ये चाहता हूँ, क्या मैं really, मैं by heart, I really want Naisha to do what I am doing in my corporate career, or what probably Garima left at some point in time? That is the question, because we are not here to impress you. You don't have to impress us. Okay. It could be a cup of tea for you. It could not be a cup of tea for you. That's how most people respond and react. But the bigger question is,
have you thought about a backup? Okay, because 2 days back I was just speaking to somebody was at our home. We've just moved house, and there was somebody who had come from the upper ground to our floor. We invited them for food, and we were just having a chat. हम लोग बात कर रहे थे. So the guy happens to be from X Insurance and all that, and all of a sudden the point came to term insurance and health insurance. Okay, so ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला term insurance इसलिए होता है कि probably all of a sudden the entire economy collapse ना कर जाए, you know, कि all of a sudden आप औंधे मुंह ना गिर जाए. You just don't fall flat if something goes wrong in life, but you also need to ensure you have a good term insurance which can guarantee you, and because you, God forbid, you know, when I'm not there to fight for the insurance, who's going to fight for the claim, you know? So wo bolne lage ha. So you know, I was actually trying to qualify the guy. So ye baat wahin se nikal ke aayi. So like I said, it may be an option today for you this evening, and you may just say I invested an evening, or you may just say it wasn't for you. But whatever it is, Garima and I, we're going to talk from our personal experience, and we're going to talk what we've seen and what we have experienced. Plus, हम वो बात करने वाले हैं जो हमने अपने आसपास लोगों को देखा है. Because I remember, you know, I have seen people changing their streams. मतलब अगर वो queue में खड़े हुए हैं for admissions, people have changed their subject streams. In fact, ये मैंने graduation के time पे भी देखा. And Allahabad University के time पे कि जब वो पूरे admissions हो रहे थे, I saw people moving from commerce to arts, you know, just like that. Because मैं खुद commerce था, तो obviously इतनी पढ़ाई नहीं की थी science वाली. Yeah, but then I did fairly well in whatever I did. So you know, people change. ऐसे radical decisions होते हैं. The house we moved into recently, somebody checked with me how about the builder and this and that. मैंने experience अच्छा दिया, उसने घर plan कर लिया. You know, lakhs of rupees of investment just because कि feedback ठीक से मिल गया. You're getting me how people make decisions. So in our life we make very few decisions. Okay, so Garima and I together, when I talk about, I believe I made 3 major decisions in my life. One was moving from Allahabad to coming to Delhi and you know, getting higher education, and then making my career. Second decision was to get married to my best friend, you know, from the college, MBA. तो वो गरिमा से शादी करने का मेरा दूसरा major decision था. And the third major decision I you know, strongly believe now when I look back is starting our own entrepreneur journey, starting our own startup, which happens to be our backup plan. Now, let's understand and see through some slides, and I don't have many of them, just a dozen of them. Let's understand कि I'm sure कि इतनी देर में हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको ये तो समझ में आया कि why you and I are here. Because on a Sunday evening, 8:30 p.m. and you know, about to be some dinner time or some dinner and drinks time and whatever time, camera switched on जिन्होंने कर रखा है, trust me, I really appreciate that, because you have shown your first level of commitment. You know, I have a very senior colleague in the business fraternity. His name is Kumar Shivaram, and he says the first thing I look in a possible next person whom I'm trying to help through the concept is that whether the person is accountable or not. कि सामने वाला बंदा accountable है भी कि नहीं है. And in this digital era, आप कैसे देखते हो कि सामने वाला बंदा accountable है? Because they are committed, they are there, they've switched on the camera. So I hope if you've not, next time when you are in such a meeting, you prepare yourself to switch on the camera and sit, and not to anybody else, but to yourself, to your name. आपका जो नाम दिखा रहा है ना वहाँ Zoom पे, जैसे Pritesh and Garima. So the first commitment I did was to switch on my camera, not because I'm the speaker, but otherwise also you'll find me that. Okay. So if you can do that, now why will you do that? Why will you switch on the camera? Why would you not just lie down अपने bed में आराम से रजाई में? और क्यों आप वो पेन लोगे? Because you want to come out of your comfort zone. आप कुछ बड़ा करना चाहते हो. So if you're looking at that, you would surely do that. So I'm not here to, you know, touch upon those points कि why you will be building this business. हम बात करने वाले हैं why Garima and I, हम लोग क्यों आए इस business में. Garima mentioned that we were looking for Naisha, कि उसके लिए हमें crèche ना डालना पड़े. She wanted to be a full-time mother. I had moved couple of jobs, and sometime ऐसा हुआ कि
कभी हम नहीं पसंद आए, कभी हमें कोई नहीं पसंद आया. So you overall understand कि jobs after a stage becomes more political, less technical. So if anybody can understand that, you will relate, why I was looking. And then I was looking for a life beyond bills and taxes. I was looking for a life beyond EMIs, beyond, having a credit card is good, but why to use it actually? Until unless it's an Amex and you want to flaunt it, क्यों use करना है उसको? ठीक है, use ही क्यों करना है? Somebody was, a friend of mine was telling about a metal card. He says, Amex का एक, beyond a range, they give you a metal card. When the card will fall, there will be some sound. I said, why so? So he says that shows that you've reached a life, a stage in life. मैंने कहा कमाल है यार, मतलब क्रेडिट कार्ड को भी जमीन पे गिरा करके उसकी आवाज सुनने का भी कुछ एक स्टेज होता है. He says a lot of people do that. High net worth individuals. I said, okay. See, क्या है कैसा है मुझे नहीं पता. But if you're looking for a great life from your current good life, okay, probably this evening could be for you. Okay. We were looking for something. Eventually, we had a lot of queries कि कैसे करेंगे, क्या होगा, what is gonna come my way, and we got them resolved. So in next, around 30 minutes, you will get to know what I'm talking about. The whole idea is to understand if any of these, what I'm sharing here, इससे कुछ आपको relate हो रहा है कि नहीं. Are you able to, कुछ आप इससे, do you feel, yes, something over here जो ये बात कर रहा है, this bald guy is trying to talk about something which makes sense, maybe through the presentation. So the whole thing is कि what I feel about my success, मैं जो सोचता हूँ, क्या वो मेरी success well-rounded है कि नहीं? And how did I come across this point to understand? Because what you don't know is what you don't know. It's just like the body odor doesn't get to my nose. It goes to Garima and other people in the family. By the way, there is no body odor, but just in case there is, okay. And they'll definitely come and say कि पापा 3 दिन हो गए, सर्दी बहुत है, but तुम नहाए नहीं हो. So the whole thing is how do I get to know? So a few things I would not get to know until somebody tells me about. And this wheel is shared by one of my very good friends. His name is Sumit Bahadur. He's he's an alumni from DPSRK Puram, IIT Delhi, top 100 ranker, went up to become the vice president of big names like HP. He also went to further establish startups, which today are called Accenture. So I hope you heard these names. So the guy happened to talk about this. उन्होंने इसके बारे में बताया एक प्लेटफॉर्म में, और ये मुझे बहुत इंस्पायर करा. Because when I tried to rate myself on a scale of 0 to 10, तो मेरा जो ये wheel था ना, that wheel was not well rounded. Because trust me, I was in a rising corporate ladder. पैसा वैसा on the track तो बन रहा था, but health was going, jeopardize हो रही थी. Family के लिए time नहीं था. फ्रेंड्स जो थे वो वीकेंड पे फैमिली को टाइम देना या फ्रेंड्स को टाइम देना. सो बहुत सारी चीजें थी जो मिसमैच हो रही थी. तो जस्ट लुक इट फॉर योरसेल्फ, कुछ इसमें मिसमैच हो रहा है क्या, और डू यू हैव अ परफेक्ट व्हील? इफ यू कैन रेट एवरीथिंग 10 on 10, ये जो पैरामीटर्स मैंने शेयर किए, then you can switch off the phone, you can switch off the laptop. You don't need this opportunity at all. But if you feel anything is still missing amongst these, या फिर इससे ज्यादा भी कुछ है जो मैंने शायद मिस कर दिया, because I'm just speaking from my experience, then you need to take more information. So the whole thing is कि we are talking about money, we are talking about income, and पैसा बनाने के लिए ना 4 ही तरीके, right? एक वो जोक था ना कि something, प्लेन में 2 आगे द्वार 2 पीछे द्वार, और something happens to हरिद्वार. So I just happened to realize that. So on the serious note, making money, you got to make money only. Legitimate money can be made 4 ways. You could be an employee, be self-employed because you don't want to work for somebody. आप अपने business owner हो सकते हो because आपने setup बना दिया like Ambani or a Mahindra. In fact, I was talking to my father-in-law today, and I was just talking about, I said, have you just checked out the Mahindra guys? They have got this XUV 700, and it isn't looking like a regular Mahindra car. Just in case somebody has seen that car. तो हम लोग आज बात कर रहे थे, those are like big businessmen.
jahan pe they have set up, they have got infrastructure, more than 500 people working, and there is a system. Okay, or you could be an investor like Rakesh Jhunjhunwala, or wo sare jitne bhi bade naam hain, like a Warren Buffett. But the whole thing is, what I was taught, जो मुझे सिखाया गया था स्कूल डेज में, especially when mom used to wake me up, सुबह time से उठो, जाओ and get good education, you need to top the class. In fact, my father was उनका रिएक्शन बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड वाले दिन आ जाता था. कैसे आता था? बिकॉज दोज टीचर्स वर वेरी नास्टी टीचर्स इन आवर स्कूल डेज. सो वो क्या करते थे, सो लेट्स से इफ दिस इज लाइक द रिपोर्ट कार्ड, सो वो फर्स्ट से लेकर के ना 50th तक का नंबर, द रैंकिंग्स वर टॉप टू बॉटम order. So the teacher used to put her nice nail paint wala index finger, and वो ऐसे ऊपर करके, and then she used to bring it down, and वो जैसे top 5 से जरा सा नीचे जाता था, तो my father used to feel very offended, because अरोड़ा साहब को किसी ने बुला लिया एक ऐसे रिपोर्ट कार्ड को दिखाने के लिए, which is not so great. So my father used to feel very offended. तो हमें क्या बताया गया था? You have to be in the top 5 of the class. So if the result was top 5, the father used to be decently happy. And to make it worse, even in the top 5, my teacher used to at times say ki, report card pe likh ke, has done well, can do better. अब वो जो can do better होता था, that used to screw my happiness for the until the next set of reports. So this is how Garima and I, हम लोग इस तरीके से, आप लोग भी हो सकता है ऐसे ही in your life ऐसे ही आगे बढ़े होंगे. But then even in MBA, they did not say how to make more money. They just said, you just go get a job. मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? The whole idea is, most of us are running in the left quadrant as an employee or as a self-employed. We could be chartered accountants working for somebody or having our own consultation. Okay, but it is all about my time and getting my money. It is not about leveraging time. Okay, and to leverage time, you have to put expenditures. आपको overhead खर्च करने पड़ेंगे. You have to hire people. लोगों को job पे रखना पड़ेगा. PF, ESI, so many benefits you got to give to people. And then something which is very well developed, like a skill with you, you forget that. And you have to manage everything. You have to become a HR, you have to become an admin guy, you have to get payrolls. अब आपको सर्विस टैक्स भी देना है, ये भी करना है, वो करना है. तो आप सारे काम जो अच्छे करने वाले थे वो छोड़ करके आप सब कुछ ऑपरेशनल निटिग्रिटी में, जिसको इन हिंदी भी से औपचारिकता के कामों में लग जाते हैं, बिकॉज यू आर इन मोर इन्वॉल्व इन दैट, राइट? But today you have an opportunity कि whatever you're doing probably on the left hand side, wherever you are in life, along with that, without jeopardizing your day-to-day schedule, just prioritizing and managing, learning how to do that from people who brought you here, you can become a business owner. Now this is going to be your plan B. Okay, at least Garima और हमें तो ऐसा लगा ये हमारा बैकअप प्लान. Okay, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ इनकम बना रहे हैं, fine, but then have you thought about times when you compromise on so many things, including kids and yourself, individual time to each other, है ना? So the whole idea is to understand how you can have your current job and profession wherever you are and become a business owner. So the option is A and D, and it is not O or. So that's the good news about it. And to get more understanding about it, what I'll suggest is कि जिसने भी आपको बुलाया है, get in touch with them. उनसे बोलो आप कि please help me get through this book called Business of the 21st Century. It's mentioned at the bottom of the screen. This book will change your entire thought perception about what you understand about money. Okay. Now moving ahead and understanding where the money is. See, the money is in the pocket. हमेशा से पॉकेट में थी, मेरी पॉकेट में थी, आपकी पॉकेट में है, and it will continue to be in our pockets, and we'll keep on spending, because whatever we are spending is business for somebody, and कोई ना कोई तो देख रहा है ना, who's watching? Somebody who's in the market is watching. How about you and me becoming active players in the market? वो कैसे हो सकता है? Because या तो हम शॉपिंग करते हैं पड़ोस की दुकान से, or we are going to the mall, or we are shopping online. Okay, so like Garima was talking about the supermarket approach, and she was talking about the cart. Abhi to digital age mein there is a cart in the Amazon also, or the Flipkarts of the world. You put anything in the cart and then they'll keep on popping up. वो तब तक जब तक आप खरीद नहीं लेंगे ना, वो तब तक pop up करता रहेगा, because उसने आपका IP address, they've smartly tracked it, because जैसे US में बोलते हैं ना, the super is watching.
So similarly, who's the super? There is a super over here. The digital world, the social media, somebody is watching. While I speak with you, somebody is also listening other than this group, because there's so much of gadget, phone, everything, internet, and they're watching our trends. Okay. So hum or aap, you and I becoming player in the market where we are spending money is what the business. What we are trying to do is कि ये जो बीच के CNF agents, distributors, wholesaler, retailer, इन सबको eliminate करके we want to go direct, connect with the manufacturer. Okay, and that's where the money is. That's where the moolah is. We also need to understand that today's day and age is not about traditional businesses and traditional selling. In fact, the cow dung cakes, जिसको गोबर के उपले बोले जाते हैं, and they are very safe. They're not hazardous because they've got a lot of science behind. आज आप उसको किसी भी ऑनलाइन में you can just simply order it and bring it to your home. अभी आप घर में वो अंगीठी भी जला सकते हो shopping online, because that's how people have made it smarter. So आज के जो businesses हैं, today's businesses are all about network. They are about distribution. They are about social media. They are about community building. How about you? Where are you? Are you in the community or you want to create your own community? Right? That is $1 million question. And what is the proposal? The proposal is, yes, with Amway. I'm sure you must have heard about this name. I'm sure you may have some information. In fact, anybody who just in case is alien to this name or this name is alien to them, I'll be doubting कि मतलब आप कर क्या रहे हो अभी तक कि आपको ये नाम नहीं पता है somehow, because that's what you should be knowing, because it's the most talked about and somehow little less understood concept. Why? Because this is about direct selling. This is about being your own boss. This is about being entrepreneurship, and Amway is the big daddy. We are number one of the industry, just like Apple is the number one in the smartphone industry. Similarly, Amway is number one in the direct selling industry. So take more information about this, understand better, and get some classified and qualified proprietary information. अभी हमें ये समझना है कि India scenario क्या है. See, the Amway India story is almost touching now 25 years. In the coming year 23, अगले साल 25 साल हो जाएंगे, and what we are doing is we are already 2000 plus crore turnover. We are there with almost 200 products. We've got the entire facility of e-commerce and store ordering, and most of our business, 80% business abhi e-commerce pe chala gaya hai. So if you got something like this, like a mobile phone, you can manage your business on your palm, on your tip, fingertip, through your thumb. You can just swap and just check what's there in store. So easy hai business, headache wala sara kaam, jhanjat pani wala, to be very very simple. Sara jhanjat pani wala kaam jo hai wo Amway ne kar rakha hai. What we are to do is we just need to understand how we will leverage this business. Okay, social communities, digital era, हमको ये समझना है ये हमारे लिए कैसे काम करेगा. And of course it's a business, ये legitimate business है, हवा में कुछ नहीं है. And here we are, we need to understand कि हमारे business में products क्या हैं. So who else better than Garima can tell us about the products and कैसे हैं products? Just give a quick brief of. Thank you so much. So आपके सामने जो screen आपको दिख रही है, you can see a lot of products over there. So we deal into a lot of categories. The first one is home care, right? In which you find all the products related to your to cleaning your house. Then we have personal care, from your head to toe, whatever products you require for your personal hygiene, that are available. So for men, women, both are there. Then moving forward, we have got skincare products by the name of Attitude. Where we deal into color cosmetics, right? And a lot of skincare solutions for the people till 25 years of age. And as we grow up, as we become more mature, so we have got a premium, super premium range by the name of Artistry for our skincare itself. And where you again get a lot of solutions for any problems you're dealing with your skin, and you can make your skin look more healthy and better. Right. Then moving forward, we also deal into durables, which is known as Queen for cookware and air purifiers. As today we know that air quality is not at all good.
So for that we have got Atmosphere Mini for our houses, and Atmosphere Drive, which is for the car. Right. Then most important, and the category I love the most, is Neutralite, which is our healthcare division. Right. We all know that health is most important, and we always say health is wealth. Right. And since 2020, people have become more cautious about their health. Right. So over here we deal into a lot of healthcare supplements. So we have to understand first that these are not medicines, these are supplements. Medicine is something, you have a headache, you go to the chemist, you buy a medicine, you have it, and in just 5 minutes or 10 minutes, you are like आपका सर दर्द ठीक हो जाता है. But what are supplements? Supplements are basically whatever we are eating. हम लोग आजकल जो भी खा रहे हैं, so there is a nutrition gap which is coming. Right, because we know, like I always give example of Pritesh. जब वो ऑफिस जाते हैं ना, so his breakfast is like हाथ में रोल लिया और भाग लिए. एक होता है कि हम जैसे बैठ के आराम से खाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है. He needs a sandwich, he needs a roll. मैं कहूंगी ना, कभी पराठा है प्रॉपर दही के साथ, नहीं उसका भी रोल बना दो, वो रास्ते में खा लेंगे. I'll drive and I'll have it. Right, तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन गैप आ रहा है. You are not eating because you are hungry, you are eating because आपके ऑफिस ने बोल दिया है कि 1 बजे आपका लंच ब्रेक है. राइट, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है फूड आइटम्स के साथ. तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन गैप हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है. सो उसे खत्म करने के लिए, या उसे आई वोंट से खत्म, बट काफी हद तक कम करने के लिए वी हैव गॉट सप्लीमेंट्स. सो ये सप्लीमेंट्स, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक. हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं. सीड टू सप्लीमेंटेशन, एक एक चीज जामवे ध्यान देती है कि किसी चीज में कोई मिलावट ना हो, सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक हमारे तक आना चाहिए. कि बिकॉज व्हेन वी ईट, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी खुद ऑर्गेनिक है, तो हम लोग केमिकल्स खाने के लिए नहीं बने हैं. राइट, सो व्हेन वी कंज्यूम समथिंग ऑर्गेनिक, तो वो हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. सो आई जस्ट क्विकली शेयर अबाउट वन प्रोडक्ट which is like nowadays my favorite. This is eye candy. Right, so this is eye candy from Neutralite, and the best part about this product is that it is in gummy format. Right, so what is a gummy format? आप कितनी बारी we used to meet people जिनको हम supplements के बारे में बताते थे, and they used to say नहीं यार, वो ना दवाइयाँ नहीं खा पाते हम लोग. So उनके लिए we have got gummy formats. आपने खोला, it's a cute little toffee, and one can have it, right? You can have it. Yeah, you can have it. Okay, great. So और अब इसका फायदा क्या है? We all know कि जब से हम लोग work from home situation में आए, we have come into the online era. So virtual होने के बाद हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम हम लैपटॉप के आगे, फोन में बिताते हैं. राइट, हम लोग रात में सोने से पहले द फर्स्ट थिंग वी डू इज, हम मतलब सोने से पहले जो चीज हो रही होगी, लास्ट थिंग दैट इज फोन चेक करना. सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग वी डू इज अगेन वी टेक अ लुक एट आवर फोन्स. राइट, सो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दिस हमारी जो आंखें हैं उस पर एक स्ट्रेस आता है. यू फील हेडेक, धुंधला लिटिल दिखने लग जाता है. आजकल हम लोग एलईडी, हम सबके घर में बहुत ज्यादा एलईडी है. राइट, तो होता क्या, कहते हैं एलईडी से ना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है. राइट, ये लोग ये कह के बेचते हैं, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड, आप अगर थोड़ी देर किसी एलईडी की तरफ कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं ना, और आप आंखें नीचे करते हैं, आपको थोड़ी फॉर अ सेकेंड और टू आपका ब्लैंक हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो उसमें जो जितना ब्लू रेस निकल रही हैं, वो सब हमारी आईज को डैमेज करती हैं. सो दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर दोज जिनको चश्मा लगा हुआ है. लेट मी टेल यू, नॉट स्पेसिफिकली जस्ट फॉर मी बिकॉज मुझे चश्मा लगा हुआ है, नहीं. दिस इज कि हम अपनी रोज की जो हमारी आई हेल्थ है उसको बेटर कर सकते हैं. अगर हमारी आईज हेल्दी है तो हम उनको और हेल्दी कर सकते हैं. अगर हमारी आईज वीक है तो हम उनको और न्यूट्रिशन दे सकते हैं. मेरी मम्मी बहुत कहती थी कि सर्दियां आ गई है, रोज ना गाजर खाया करो, गाजर का जूस पियो, गाजर खाओ, तुम्हारी ना चश्मा उतर जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने बहुत गाजरें खाई हैं, मैंने गाजर के जूस पिए, सब कुछ, बट क्योंकि जो हम लोग खा रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग द राइट न्यूट्रिशन इन दैट, बिकॉज अगेन द कैरेट विच इज कमिंग टू माई प्लेस इज नॉट ऑर्गेनिक. अगेन इट हैज गॉट सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स और सब कुछ उसके अंदर होता है. So हमारा जो प्रोडक्ट है, दिस इज विद लूटेन, इट हैज गॉट zeaxanthin.
सो आप इसको रेगुलर लेना स्टार्ट करते हैं, यू कैन फील द डिफरेंस, राइट? आप अपने लिए ले सकते हैं, यू कैन गिव इट टू योर किड्स ऑल्सो, 12+ years, 10+ years, anybody can have it. And again, as I said, it's in a gummy format, you just have it, you enjoy it. It's a very tasty red grape flavor. And आप उसमें देखोगे, when you start having it, you'll actually feel कि आपकी आईज में डिफरेंस भी आ रहा है, राइट? तो आप दिन की 2 ले सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, आपको जब मन करता है. एंड आई ऑलवेज से दिस थिंग कि दिस गमी फॉर्मेट इज सो अमेजिंग कि हमें मीठा खाने का मन करता है ना, जब खाना खाने के बाद हम लोग एक गमी खा लेते हैं. सो इट्स एनी डे अ वेरी हेल्दी चॉइस, right? So this is a little information about the products, and I'll only say one more thing ki as ladies, lady of the house, we all we have this authority कि हमें कौन से products अपने घर पे लेके आने हैं, right? So I'll only say one thing कि आप वो products लाइए जो आपके लिए beneficial है, right? So जो आपकी और आपकी family का health का ध्यान देते हैं. So Amway products any day बहुत amazing है. Take the right decision. मैं इतना प्रोडक्ट्स के बारे में इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज वी यूज द प्रोडक्ट. इफ आई जस्ट अपना कैमरा में घुमाऊंगी तो आप हमारे घर में हर जगह सिर्फ हमारे बिजनेस के ही प्रोडक्ट्स देखेंगे, राइट? सो आप जिनके साथ आए हैं उनसे और इन्फॉर्मेशन लीजिए रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 160+ प्रोडक्ट्स हैं. बस यस, हाँ, एक दिन में मैं सारा इन्फॉर्मेशन, आई कैन नॉट गिव यू द एंटायर इन्फॉर्मेशन, बट यस यू कैन टेक इट फ्रॉम समवन जो आपको लेके आए हैं. अंडरस्टैंड अबाउट ईच कैटेगरी, right? And then you will actually get to know कि हमारे products कितने better हैं और market के products से कितने better हैं. With that I'm done. Thank you so much. Super. So coming back to the presentation and lot of talk, now let's talk about the money factor, है ना? पैसा कहाँ पे? Where is the money and how would you get money? Because घूम फिर के बात ये आती है, इतनी सारी बातें बता दी, products बता दिया, where is money and how will I make money? See, money is in the business, money is in your pocket. आपको कैसे वो कमाना है, आपको ये समझना है. It's your own business. यहाँ पे कोई आपको आकर के, nobody will discipline you. You have to discipline yourself. I was just talking about a camera switch on. That's just an example to tell you how you take charge and how you would expect people to take charge. So when I came to the business, मुझे बोला अभी digital age में somebody was telling कुछ बात हो रही थी, and I was saying how about people in your team, let's say तुम्हारी organization है, and when you speak, do you want people to switch on the camera? He says yes. I said what about they would be looking at if your camera is switched on or not, and he says yes. So I said these are the basic things we do. In fact, let me tell you a very good example. My line manager in the current job, he's doing some course from IIM Bangalore. तो मेरे को बता रहे थे कि वो कोर्स की क्लासेस जो होती हैं उसमें कैमरा स्विच ऑन करना इज मैंडेटरी. Okay, why? And despite paying some 2.5 lakhs or something, whatever he is doing, आप फीस भी दे रहे हो और तब भी आपको कैमरा स्विच ऑन करना है, because otherwise you'll be marked absent and they'll simply remove you from the meeting. Okay, I was just wondering, look at how seriousness happens. So अब इस business में क्या है ना, ये छोटी छोटी चीजें will become very very evident because आपका कोई boss नहीं होने वाला है, so nobody will come to give you discipline. कोई target नहीं होने वाला है, you have to set your own targets. It will be a level playing field. So when such kind of an environment happens ना, तो क्या होता है, there is a lot of possibility of mind getting radical. मतलब मैं कहीं पे भी इधर उधर घूमता रह जाऊंगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है. अब डायरेक्शन कैसे बनती है? डायरेक्शन बनती है विद हैंड होल्डिंग. सो जिसने भी आपको बुलाया है, अलाउ देम टू होल्ड योर हैंड टू टेल यू द नेक्स्ट स्टेप्स. Okay, there are 4 fundamentals of the business, which is freedom, family, hope, reward. Your task is to go back और जाके पूछो समझो कि ये freedom, family, hope, reward जैसे heavy principles इस business में कैसे काम करते हैं, because वो 4 founders ने बनाए थे. And then because there is no starting cost of registration, you don't need registration money or a GST license to start the business, then sometimes हम उसको बहुत easy ले लेते हैं. So आपने क्या करना है, you got to go back, जिसने आपको बुलाया, ask them how do I make these incomes from 500 to a lakh of rupee practically, and ask them to make you meet somebody virtually, 2-way conference या 3-way conference या 4-5-way conference के through जो already ये income बना रहे हैं. Somebody who's making a lakh of rupee. They are called platinums in the business, or a founder platinum in the business. So आप उनसे बोलो कि वो उनसे आपको introduce कराएं. Okay, I'll just quickly
tell you how the money is flowing in the business. Money will come jab there will be a movement of products, because we are in a product business and those are legitimate products. So how will you move products? The first product jo main move karta hu wo khud ko move karta hu, by self use. Like Garima said, we can just turn around the camera and a 360 degree will give you a good glimpse, including the atmosphere, air purification to the magic corner we have. And we are using products. I am so proud about, I boast about it. You may find it little flattery, but that's okay. It's my business. In fact, the other day wo jo couple aaya hua tha, she said ye aapki, and she could not understand, thoda distance pe the, so she says ki aapke ye office ke products hain jo aapne display kar rakhe hai na. No, I said no, I'm in the Amway business. And like you see, Garima is a full-time mother. These are some of the rewards. So मुझे तो बस खाली drop the message करना है ना. आए तो वो डिनर पे थे, अब मुझे प्लान थोड़ी ना दिखाना है उस समय, but I need to put something, a seed, so that there is a take back. Because next time when we talk about it, we'll talk straight about the business, right? तो आपको ये समझना है कि आप कैसे करने वाले हो. तो self use करिए. What you like, जो आपको अच्छा लगता है, use करने के बाद you can retail. Talk about it. Share it amongst some set of people, friends around you. Because if I need a backup plan, you need a backup plan, और भी लोग होंगे जिनको backup plan चाहिए होगा, और अगर just in case backup plan नहीं चाहिए होगा तो अच्छे products चाहिए होंगे, so we can have some loyal customers. And the third and the most important is the art of creating team, and that is something जो कि acquired skill है. You will be probably learning that skill, because इस business में आप positional leadership से काम नहीं करेंगे. You will be in permissional leadership. Positional leadership is jab office mein, if when I am the boss and I tell people this is what you're supposed to do, and my boss tells me this is what you are supposed to do, right? But then that is wo positional leadership hai. Yahan pe it will be permissional. When you will allow somebody ki yaar, I want to learn, I want to do this business, help me understand how to walk through. Okay, so they will become your Google map. Right. So in next to 6 to 18 months, you can look for a 1 lakh rupee of income. This is a little way forward, big picture ki aap is business mein aaye ho, what kind of income you are looking at. I'll simply talk about ki aapko jo bhi Amway ke bare mein pata hai, leave it aside and ask from somebody who's a founder platinum and above genuinely what the Amway business is, and they're going to tell you exactly what the Amway business is, because they have made incomes like these. Any founder platinum and above with Core Plus is making almost $1.5 lakh rupee per month these days. So understand that this is serious income. 1.5 lakh rupee in next 2 years time. आपके job and profession के अलावा kind of income जिसके लिए you are not the only person responsible. That is quite a smart income. Moving ahead, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि where is the big picture. See, the big picture will be when you're looking for other people's success. The big picture is when you're making other people successful. The big picture is when you understand, when you make 6 good teams where every team, let's say every family in each team is trying to get an income, which I was talking about, like a founder platinum. They are making $1.5 lakh per month. They are getting freer in life. They are getting stress-free in life. They are having more peace of mind. So, आपको उनकी help करने के एवज में, what you get compensated for is a big money, which is like a leadership bonus, 6%. It's like a asset-based income. I hope you understand asset-based. I hope you understand asset. Trust me, your car is not an asset. Asset is something which can get you income from which you can run your lifestyle. So that kind of income. Okay, so we respect what you're doing. I respect my job even as on date. But is this what I want to do next 10, 15 years, or probably, retirement at the age of 60? Certainly not. It's not a great thing to have somebody playing your music and वो maneuver कर रहा है आपको थोड़ा सा, they're trying to twist, professionally arm twisting भी बहुत होती है at various levels, and then it becomes a little typical pyramid. वो high point आ जाता है, वहाँ पे कम लोग होते हैं, and when somebody falls from a really high point, चोट बहुत लगती है. So if you want to make a backup, you want to get yourself insulated, probably this could be for you. So look for the big income. There are rewards, there are beaches of the world. Right now we are looking at Greece. Garima and I are absolutely excited about Greece.
So we are in the zone. There is a program called Super 21. Understand more about it, how you will do it, आप कैसे करोगे. And 2023, the world will be much better place. The COVID will be almost about to end. Trust me. So 2023 में आप कहाँ ग्रीस में होने वाले हो? I was just talking about in some other platform अभी थोड़ी देर पहले. Don't get confused about the grease which is used in your car. This is grease which is destination Greece. Okay, so we are talking about a destination which has got we talk about Greek mythology. In fact, I'm a Shakespeare lover. I have such fond memories of my reading Shakespeare and Greek mythology. There's so much. I mean, there's history. Go take more information about it. Google about Greece. Put some Greece pictures. Find a dream for yourself. I'm sure आप अपनी जॉब से भी शायद जा सकते हो जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, और मे बी थोड़ा comfortably. But is your boss gonna give you that much of freedom to really enjoy Greece kind of a look at that? Okay. Long and short, coming to the point, आपने इस business को देखा, you came, you saw, you just saw Garima and I, and maybe you still have doubts. Let's understand आप क्या करने वाले हो. See, there is Amway and there is Brit Worldwide, and these are the two association along with the set of people जो कि आपको लेके आए, your sponsor, who is somebody who's brought you to the business. Now they may be making the kind of money which I was talking about, or they are in process of making. Either ways, but the good part क्या है ना कि वो connected हैं. They are through dotted lines. They are connected to set of people जो already coach and mentor हैं इस पूरे process में, who can make you that money. Okay, they can save you time. You saw the business today. Somebody saw it 10 years before. He's become a diamond. Ain't be for you, because हो सकता है यही काम आप अगले 4 साल में कर लें. Why? Because अभी you have an experience of somebody who's gone through the process. They would like to save time. Right? So understand more, change your shopping habits, thoda share kariye, learn kariye, seekhiye, get onto applications, understand more, build business with integrity and honesty. These are some things. When I was told that there is nothing illegal, immoral, unethical, boss, I tell you, I was flat. Somebody impressed me. किसी ने मुझे इस बात की ये 3 लाइनें बोल कर गए. And the guy was Inderjeet Bushri. He's a senior business leader in the business fraternity. और YWCA की open में he said there is nothing illegal, nothing unethical, and nothing is immoral. And I was it's just like किसी ने मुझे मतलब woo कर लिया. I was impressed. I said man, मतलब मेरी wife और मैं एक platform में, God forbid अगर मैं नहीं भी हूँ, travel कर रहा हूँ, look at Garima, she'll be among set of people जहाँ पे इस तरीके के high set of values and ethics हैं. So I was really taken back positively, and these are the set of people I tell you I was talking about कि कोई ना कोई आप किसी को navigate करने का मौका देंगे तो आपके success journey को कोई navigate करेगा. उसको mastermind alliance बोलते हैं. In fact, Srinivas talks about it so many times. And वो एक this is इसको हिंदी में बोलें तो एक बड़े से केबल नेटवर्क के साथ अपनी छोटी सी केबल की तार को जोड़ देना, and then you get the satellite experience. Okay, as simple as that. Somebody I could find who could tell me my blind spots, somebody who could tell me what I cannot see. अभी तो हम कैमरे के सामने बैठे हैं तो हमें काफी हद तक कुछ दिख रहा है मेरे पीछे का बैकग्राउंड, बट ट्रस्ट मी ये वाला पोर्शन अभी भी नहीं दिख रहा है. यहाँ पे क्या है या नहीं दिख रहा है. Okay, so वो कैसे दिखता है? वो तब दिखता है when you allow somebody to look at that, when you give yourself an aerial view. I found Harsh Pratap Singh and Neena Singh whom we could give that authority. You can see them over here. They are over here on the left. I'm trying to look more like him. I don't know how much time I would take to become wiser like him. But yes, eventually एक time ऐसा आया, and one fine day I said, I need you to help me financially. Other than the business, आपको ऐसे लोग मिलेंगे life में जो कि, and then my entire financial intelligence, which is in the process, is through Harsh Pratap Singh, because I've started spending money, with that kind of thought process over the period of time. तो ये सब चीजें कहाँ MBA कॉलेज में मिलती थी, और कौन बॉस आके बोलेगा बैठ जा मैं तेरे को सिखाता हूँ कि पैसा कैसे संभाला जाता है. मतलब कमाने के लिए तो चलो ठीक है, but how do you actually handle money? So in life you will have people who will help you. What we are looking forward is a process of identifying
if you actually qualify for this business. Because trust me, somebody who's invited you probably is not the last person for them. You have to understand that. और मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि मुझे हर्ष प्रताप सिंह दूसरे नहीं मिलेंगे. He may find another Pritesh. So I settle, मतलब बहुत ज्यादा ईगो नहीं रखी वहां पे. I just humbled myself. I'm still trying to humble, still trying to get better and be more better with people, because टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब्स में तो हम लोग बहुत अलग तरीके से बात करते हैं ना. तो थोड़ा सा बेटर हो रहे हैं, बेटर कर रहे हैं. यू विल बी गोइंग थ्रू सम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. समबडी विल टेल यू दिस इज हाउ यू गेट टू रजिस्टर. But what we are looking at somebody who's willing to learn. Okay. And I was talking about camera switch on. That is the first step of learning. Okay. Because I'm not speaking anything जो कि कुछ मेरा personal specific है. This is what you will expect from somebody who comes in your organization. Second thing is, be willing to work hard. No free lunches, no shortcuts. What Garima and I shared in last 40-45 minutes, that is the shortcut. Okay. Brit Worldwide is the shortcut and Amway is the opportunity. And somebody who's brought you here, आप थोड़ा सा सीखो, समझो और जानो, because they will not have all the time of their life for you. You got to steal their time. Okay. Amway.in and britindia.com are the two official pages. And that's the man which you see on the right hand side. That's Bill Britt. वो प्रणेता है इस Brit Worldwide. He's the founder who evolved this entire concept of Brit Worldwide, an education system, who also helped so many people, millions of people across the world to become financially free. Because what he said was कि until and unless you are economically free, आप और freedom नहीं enjoy कर सकते. The first level of freedom will come through economic freedom. जब आप आर्थिक रूप से फ्री होंगे तभी आप किसी और चीज के लिए सोच सकते हैं. Then that's the time you can think about bigger things in life. So Garima and I, we found this business as one big adventure, one fine journey. और मजे की बात क्या होने लगी कि ना, over the period of time we figured out कि this is the big plan which is there for us. This is what we want to make big. This is our second baby, after Naisha, because the business came after Naisha. We पहले तो product ही use कर रहे थे, तो product से Naisha आ गई normal delivery में, and फिर ये business आ गया. So this became the younger brother to Naisha, and that's all how we're looking at. You may still look at it as the Amway business. Well, that's fine. It is okay. But क्या होगा ना कि आप थोड़ा business देखेंगे, थोड़ा और देखेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और जाएंगे, and फिर ये जितना सारा brain functioning है ना, वो business वहां से निकलेगा और वो सीधा यहाँ चला जाएगा. And the moment it will get there, then there is no looking back. Because the question is not how great the Amway business is. The question is not how smart am I without the Amway business. The question is, if I decide to do the business, am I all in? क्या मैं पूरा business में हूँ? Am I all in? And वो जब point आ जाता है all in का, then it's a matter of just 6 to 18 months, like I was telling you, and then वो point B आ जाएगा, then there is no looking back. It's one fine opportunity. Get excited about life. I hope you're excited about helping people. I hope you're excited about your future. I hope there was a lid, थोड़ी सी, which you could get passed on. Take more information. थोड़ा और जानकारी लीजिए. Get more closer to the set of people who are making it. Take information from somebody who has got fruit on the tree. Because anybody who's not got fruit on the tree is not the right guy to tell you, So उसको हिंदी में हम राय बहादुर राय साहब और पता नहीं कौन कौन सा राय बोलते हैं. So don't get into the राय thing. Check it out for yourself and get yourself qualified. And thank you so very much. And back to Reema ji. Yeah. Thank you so much, Garima and Pritesh. And can we again have a big round of applause for them? Can we have a big round of applause for them? So it was so very well explained, so nicely, beautifully the plan was being showed and explained by Garima and yes, Pritesh ji.
So I really loved the way you had really explained by quoting your own examples and giving your experiences and your expertise. So I must say that all the new invitees, those who have joined today, I really don't think that they have any doubt in their mind, and they are really going to decide this and will really join us all. So thank you so much again, Garima and Pritesh. Now let's watch a video which validates the authenticity of the plan, which right now the Garima and Pritesh had showed. So now I request our AV team to play the video. So over to the AV team. Thank you so much for this playing this video. I really thanks to the AV team. Now, I would like to invite some of our successful entrepreneurs who have really built this business very passionately and have reached to certain levels. So now I will call out the names, those who are the founder platinum. So first of all, I would like to welcome and Shakti Prasad and Sanjukta ma'am. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजुक्ता साहू एंड इस बिजनेस को हम दोनों अपने दोनों बच्चे के साथ बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए. थैंक यू. All right, good evening. Can we have a great round of applause for Pritesh and Garima? What a wonderful plan. And Pritesh, as usual, kya sense of humor hai na friends? And hi, my name is Shakti and I'm working as project manager in a MNC और उसके साथ इस business को हम दोनों build कर रहे हैं. Thank you very much and back to Rima ji. Thank you, Shakti Prasad and Sanjukta ji. Now I would like to invite Aparna and Ajay Gautam. हेलो एवरीवन, नाम अपर्णा गौतम है, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है और हस्बैंड अजय कुमार गौतम जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है. और आज के स्पीकर के लिए एक जबरदस्त क्लैप होना चाहिए. वैसे भी प्रीतेश जी एंड गरिमा का जब भी प्लान होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ. जो उनका वे है ना कन्वे करने का, बिल्कुल लगता है कि जब बात में इतना बड़ा बिजनेस वो बता देते हैं. आप लोग अगर समझेंगे तो कितना बड़ा ये बिजनेस है, एक बार अच्छे से समझिए, उसको बिल्ड कीजिए. थैंक यू. Thank you, Aparna ma'am. Now I would invite Jyoti Prasad and Shushmita.
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाम सुष्मिता ज्योति प्रकाश, हाउस वाइफ हूँ। और देन यस कि आज तो कुछ मैसेज देने का जरूरत ही नहीं है, मतलब इतनी औसम प्लान है। और जो आई थिंक न्यू लोग आए हैं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट आज डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। नाम ज्योति प्रकाश है और आज रियली जैसे सुष्मिता बता रही थी बहुत कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन प्रीतेश एंड गरिमा का जो है, जो फर्स्ट जो सर्कल का जो था, साइकिल का जो सर्कल था, रियली वो अट्रैक्टिव था। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे इनकम भी ले रहे होंगे, क्या वो जो 10 पॉइंट जो था उस पे बैलेंस है क्या? हमारा साइकिल ही बैलेंस नहीं है। तो आज सोचना चाहिए और गरिमा एंड प्रीतेश के लिए एक बार क्लैपिंग करना चाहिए, जबरदस्त। थैंक यू। Thank you so much. Now I would like to call our next founder platinum, Amit Kumar Gautam and Lakshmi Gautam. Thank you very much. Let's have a wonderful clap for Pritesh and Garima. Wonderful plan. Awesome. We are Amit and Lakshmi Gautam. We are MBA qualified and never did a job. Through this awesome opportunity, you take a decision. If I can do it, you can do it too. Yeah. Hello everyone, and we are yes name बता ही चुके हैं, and we are building this business very passionately to creating and to building an asset and creating an income of 10 lakh rupees per month in 1 or 2 years, right? So if we can do this, you can definitely do this. Just take a decision and move forward. Well done. Best of luck. Thank you so much, Lakshmi and Amit Diji. And now moving towards, now I would like to call upon our mentors. Without holding the hands of our mentors, we really can't get success. That is true. So for this business and to have that achievement, to have that success and to go along, so I would like to call our mentors who really leave no stones unturned to give their expertise, to give their guidance in every, and we are always eager to listen to them. So now keep on, and they really keep on encouraging us to achieve our goals and desires, that how really we can build this business in this, how we can really build this business by holding their hands or by the coaches and from our mentors. So now I would like to call upon our welcome, our diamond couple, Srinivas sir and Subhashri ma'am. So can we have a big round of applause for them? Wow, that's interesting. Rimaji, proud of you. Inviting in such a great way. So, yes, I'm impressed. Thank you. Pritesh and Garima are superb. I mean, whenever they saw the plan, they talk about this business. It hit like, it hit like a big thing. You are going to do big things, right? Business is amazing, right? जैसे मैं क्यों बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता हूँ, दिमाग में कि मैं अगर वहां होता तो क्या होता, राइट? ये बिजनेस को बिल्ड करके हम क्या अचीव किए हैं, अगर मैं कंपेयर करूं, आई एम स्पीचलेस, राइट? मैं कई बार देखा है, बीइंग इन आईटी इंडस्ट्री, कई बार रिसेशन हिट होते हुए देखा है। लोगों को बैकअप इनकम की रियलाइजेशन बाद में होता है ना, जब हिट होने की बात होता है। 2008-9 वाज बैडली हिट बाय रिसेशन, है ना, तभी मेरा ठीक था सब, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट था, राइट? स्मार्ट वही होते हैं जो दूसरे का मिस्टेक से सीख लेता है और उसके लिए कुछ काम करता है ना। एवरेज लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि मेरे साथ होगा तो तभी मैं करूंगा, है ना, रिसेशन मेरे तरफ आएगा तो मैं करूंगा। ये बहुत ही, दरअसल यही होता है लोगों का मिस्टेक, है ना। दूसरे के मिस्टेक से सीख जाओ और पहले तैयार कर लो। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एसेट बेस्ड इनकम, यू आर क्रिएटिंग एसेट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर जनरेशन टू कम,
राइट? ये बिजनेस कहाँ से मिलेगा? ये बिजनेस की अगर डेप्थ बताए हम समझा नहीं पाएंगे। आज प्रीतेश टोल्ड करेक्टली कि ये बिजनेस धीरे धीरे जब आपका अंदर जाएंगे, सक्सेस होगा, तो आपको बिजनेस का जो इंटरेस्टिंग पार्ट पता चलेगा। इट्स लाइक ए शुगर केन। आप जब गन्ने खाते हो ना, तो ऊपर से जब नीचे नीचे जाते हो, स्वीटनेस बढ़ता रहता है, राइट? ये बिजनेस जब जब आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बिजनेस बिल्ड करेंगे, तो आपका कमिटमेंट भी बढ़ेगा, आपका उसका स्वीटनेस भी बढ़ेगा, उसका रिवॉर्ड से जब आप बेनिफिटेड होंगे, तो आपको और अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। बट बहुत ही जबरदस्त प्लान, और ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन भी दिए कि वीडियो ऑन करना इज ए कमिटमेंट, राइट? आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये जरूर कहना चाहिए स्पीकर को। मैंने कहीं देखा है, अगर साइना जिस दिन होमवर्क नहीं करती है तो वीडियो ऑन नहीं करती है, और जिस दिन वो होमवर्क करती है और दरवाजा बंद करके प्लीज डोंट डिस्टर्ब, है ना, मैं कभी कभी आता हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, कि कुछ पानी लेना है, नहीं, कुछ मत पूछो, सीरियस। एंड जिस दिन होमवर्क नहीं करेगी, बेड के नीचे स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ क्यों, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, हमारा क्लास तो कैंसिल हो रहा है, बस जस्ट हम बैठ के बात कर रहे हैं। और जब करती है तो सीरियस। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, आपका फ्यूचर के लिए आप गोल फोकस्ड हो कि नहीं, आप लेजर फोकस्ड हो कि नहीं। जब आप फोकस होंगे तो वीडियो ऑन, एवरीथिंग, ड्रेस सेंस, सब कुछ बढ़िया होगा। बट कुछ लोग क्या है, जब सक्सेस के बाद ये सब करेंगे। मैं जब प्लैटिनम होऊंगा ना, मैं बहुत बड़ा लैपटॉप खरीदूंगा और 3000 का टाई पहन के और 10,000 का सूट पहन के 1 घंटा पहले बैठूंगा। ये नहीं होता है। लाइफ इज ए कैफेटेरिया, यू पे द प्राइस फर्स्ट, यू विल गेट द रिजल्ट। यही आपको सीखना है ना? आप पहले प्राइस पे करो, पहले आप एक्टिंग करो, ठीक है? आप एक प्लैटिनम हो, 1 लाख का इनकम अभी दिखा है ना, कि 1 लाख इनकम आ रहा है, वो फील करो, देखो आपका कमिटमेंट कैसे होता है। तभी जाके आपका लगेगा कि हाँ हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग सेंसिबल। अदरवाइज इट इज अनदर मीटिंग फॉर यू। अच्छा ठीक है प्रीतेश, गरिमा प्लान दिखा रहे हैं, हम देख लिया, बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, उतना तक है। बट आपका कमिटमेंट, आप लर्निंग कर, वो नहीं होगा। अगर आप टाइम दे रहे हो तो 100% दो और 100% लो। मैं कई बार बताया, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस, आज की सेशन से क्या लर्न करें वो मैटर करता है। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी बहुत अच्छा बोलूंगा, मुझे मैसेज SMS कर देना कि श्रीनिवास डैश 1 2 3 4 5, ठीक है? ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा। व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एंटायर सिस्टम, कि आज के प्लान से आपको क्या मिला, दैट वुड बी योर टर्निंग पॉइंट, है ना? एवरी डे इज ए इंटरेस्टिंग डे। अगर रोज सीखते जाएंगे ना, डायमंड कुछ भी नहीं है बिजनेस, डायमंड इज जस्ट द बिगनिंग, राइट? ये बिजनेस बहुत ही डेप्थ है ना, ये एक समुद्र है, ठीक है? अभी तो हम एक दो क्या बोलते हैं, एक दो पत्थर कलेक्ट कर पाए, ठीक है? बहुत कुछ है बिजनेस जो रिवार्ड देता है, और उसमें डेप्थ बहुत है, ठीक है? ये इट इज बेटर देन एनी जॉब इन द वर्ल्ड। आई वाज इन द जॉब मार्केट, मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जब अभी सुबह उठ के स्कल्प 2.0 में फोटो वीडियो कर ये बनाते हैं, अपलोड करते हैं, ये लाइफ कहाँ मिलने वाला था, राइट? ये फिटनेस कहाँ मिलने वाला था, ये और सब कुछ जिंदगी से चला जाता है, सिर्फ पैसा अकुमुलेट करते हैं जरूर, बट जिंदगी वो फन नहीं होता है। दिस इज अमेजिंग बिजनेस, बी सीरियस, विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन, बी हियर। तो ओवर टू शुभश्री। जबरदस्त सेशन एंड थैंक यू सो मच प्रीतेश एंड गरिमा, आप अपना वैल्यूएबल टाइम, कीमती टाइम, क्योंकि टाइम एक बार मीन्स हमेशा श्रीनिवास बोलते हैं 2 वैलेट होती है, ठीक है, 2 पर्स होता है, एक में टाइम है, एक मनी है,
ठीक है, टाइम अगर जा रहा है तो वापस नहीं आएगा, पैसा कहीं अगर हम जा रहा है तो पैसा तो बहुत कमा लेंगे फ्रेंड्स। तो आप जो अपना कीमती टाइम हमारी टीम के लिए दिए एंड उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं तो हमेशा बहुत एडमायर करती हूँ प्रीतेश एंड गरिमा को कि एटलीस्ट एवरी 1 मंथ में एक बार उनका प्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए। क्या जबरदस्त कपल है एंड कितना बढ़िया बोले, ठीक है, कितने लोग सिंसियरली राइट डाउन किए हैं। मैं तो की हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर किसी का भी प्लान हो, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं बता दूंगी कि वो एक एक लाइन वो क्या बताए। एंड शायद इसीलिए मैं एंड ये नेचर प्लैटिनम के बाद नहीं स्टार्ट हुआ या डायमंडशिप के बाद नहीं स्टार्ट हुआ, जब मैं बिजनेस में नई आई थी। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अपने तरह लोग चाहिए, ठीक है। मुझे अगर अपने टीम में कैसे लोग चाहिए, मुझे एग्जैक्टली मेरे तरह लोग चाहिए। मैं हमेशा स्पोकन वर्ड यही करती हूँ कि मुझे अपने तरह लोग चाहिए मेरे टीम में, ठीक है। एंड मैं जब नई नई बिजनेस में आई थी ना फ्रेंड्स, तो हमेशा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा नए लोगों को कि कैसे बिजनेस प्लान दिखाते हैं। कुछ बहुत सारे चीजें खाली तो मोटा मोटा बिजनेस प्लान नहीं दिखा दूंगी ना, तो मैं ना ऐसे ही लिखती थी। जैसे आज बहुत सारे लाइंस बता रहे थे प्रीतेश एंड गरिमा की वो व्हील जो होता है वो 10 out of 10 नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में हम लोगों का आर यू बिल्ड, मैंने आप किसी के कम्युनिटी में हो या आप कम्युनिटी बिल्ड करो, बहुत सारे ऐसे लाइंस में लिखी हूँ। डायरेक्शन मिलती है आपको हैंड होल्डिंग से, ठीक है। तो ये सारा चीज ना आपको काम आएगा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए फ्रेंड्स। अगर आप सिंसियरली ये प्रेजेंटेशन ओनली नए लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। नए लोगों को तो आज एक जस्ट ओवरव्यू मिला होगा, बट यहाँ पर आप लर्न कर रहे हो कि मुझे कैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है। अगर प्रीतेश एंड गरिमा की तरह कपल मेरे टीम में आए, वो तभी दिखा सकते हो जब प्रीतेश एंड गरिमा कैसे दिखाए प्रेजेंटेशन, अगर उसको आप बढ़िया से सुने होंगे, राइट डाउन किए होंगे। बट यस, हम लोग बिजनेस को बहुत सिंसियरली बहुत पैशनेटली बिल्ड किए, दैट्स व्हाई आज के टाइम में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट 7 डेज से मुझे लगता है एवरी डे हम 4 बजे जाते हैं और खूब सारे शॉपिंग करके लाते हैं, ठीक है। मैं वही श्रीनिवास को बोल रही थी कि हम लोग पहले जाते थे शॉपिंग करने, तो श्रीनिवास को मैं साथ में नहीं लेके जाती थी क्योंकि वो बाहर ही रहते थे। आजकल मुझे लगता है कि लास्ट 7 डेज से शॉपिंग हो रहा है एंड एग्जैक्टली 50% शॉपिंग श्रीनिवास अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे बोलते हैं कि तुम पे करना, ठीक है। वो करके वो बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लाइफ चाहिए लेडीज, ठीक है, आप ये बिजनेस को पैशनेटली कर सकते हो। अगर आपको चाहिए आपका हस्बैंड आपके साथ फ्री होके मेंटली, मैंने कभी कभी घूम तो रहे हैं हमारे साथ बट माइंड और कहीं है, आप चाहते हो पूरी तरीके से आपके साथ आप दोनों हस्बैंड वाइफ, अगर आप लव मैरिज किए हो, शायद आज तक टाइम ही नहीं स्पेंड किए क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में शायद आप फंस गए, ठीक है। बट अगर ये अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप साथ में रह सकते हो, ठीक है। बट वो कितना जल्दी, जैसे अभी प्रीतेश बता रहे थे कि 2021 बहुत सारी चीजें हमें सिखा दिया, बट 2022 अमेजिंग ईयर है। आपको पता है 2022, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी भी देखती हूँ, ठीक है। 2022 रियली बहुत सारे लोगों के लिए अमेजिंग होने वाला है जो कर्म करेंगे, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे बहुत सारे सिचुएशन ठीक हो गया है, हम बाहर जाके भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वो भी हम लोगों का लास्ट ईयर शायद हम लोग बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे, बट अभी हम निकल के काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो कितना जल्दी आप ये 8 मंथ्स में काम कर रहे हो, जो कि डिसाइड करेगा 2023 में आप ग्रीस जाओगे कि नहीं। जैसे अभी बताया ग्रीस, वो कार में जो ग्रीस होता है वो वाली ग्रीस नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा सुंदर कंट्री है, ठीक है। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने टीम के साथ जाने के लिए, बट कौन जाएगा आई डोंट नो। बट यस, जो ये 8 मंथ्स में अपना 100% एफर्ट देगा एवरी डे, मैं तो एवरी डे गिनती हूँ। आज 22 दिन चला गया 2021 से, सॉरी 22 से, ठीक है। तो अगर एवरी डे अगर आप काउंट करोगे ना, तो ही आप ये बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हो। ये अमेजिंग बिजनेस, कुछ नए लोग अगर हैं तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं। शिवानी सिंह जी हैं न्यू, तो उनको अनम्यूट किया जाए। शिवानी जी, यू आर अनम्यूटेड, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, शिवानी सिंह जी।
I think she cannot unmute. कुंवर लाल झा. कुंवर लाल झा अनम्यूट है. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा? सेशन बहुत अच्छा है, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो मार्केटिंग पीपल है, जो लोगों को कन्विंस करने टाइप के मतलब कुछ ऐसे रखते हैं, वो लोग ज्यादा बेटर कर पाएंगे. हम लोगों की तो एप्टीट्यूड ही नहीं है ऐसी. गुड. एटलीस्ट आपने ये समझ पाए कि ये अच्छा बिजनेस है जो कन्विंस कर सकता है. कौन सा चीज कन्विंस करते हैं? जो अच्छी चीज होता है, राइट. अगर Of course, जो कन्विंस अच्छी चीज नहीं कर होती है, पाए, but हाँ, जो कन्विंस नहीं कर पाए वो सीखते हैं. मान लो मुझे गाड़ी चलाना है, ठीक है. मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, ठीक है. जो गाड़ी चलाता है वो चलाएगा, वो जरूरी नहीं है. मुझे सीखना है क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना है. अच्छी जिंदगी चाहिए तो ये सीखना है. तो आते रहिए. यू विल कीप ऑन लर्निंग and all the best. Yeah, we have one more name, Debashish. I will just check. Yes, Debashish, आप अपने आप को अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Yeah, Debashish, if you can hear us, yes, आप unmuted हैं. हेलो, गुड इवनिंग. Yes, Debashish. एक्चुअली मैं यहाँ पे सुधीर उपाध्याय जी के रेफरेंस से आया था. फर्स्ट डे में मीटिंग आज ज्वाइन किया हूँ आज. What did you like? आपको क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आप हम लोग के बारे में. Yes. समझने को मिला आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे. फिर आगे डिसीजन लेंगे अपने. वेरी गुड. आपको जो इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए और थोड़ा सा प्लान को देखिए. रिवार्ड कैसा है, उसको कैसे अचीव करना है, और हम आपके साथ हैं, सब लोग साथ हैं, तो यू कैन डू इट. ऑल द बेस्ट. बेसिस. ओके सर, थैंक यू. We have one more name, Malika Garai. So I will check. Yes, Malika जी का मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया. यस मलिका, आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा? आप अनम्यूट कीजिए, म्यूटेड है. Hello. Yes. Yes. Yeah. Good evening, everybody. Can you hear me? Yeah, Yes, we yes. can hear you. Yeah. I got the reference from Rima Sharma ji, Rima ma'am. So she invited me for today's session. Yeah, I like this very much, and hope you all are doing very well in this business. And I'm trying to, understand all the things, and I'll keep in touch with Rima Sharma ma'am. And thank Absolutely. you all. Fantastic. So keep on learning, and Rima is a great leader, as you can see her. Yeah. She's She doing is my very well. neighbor. She is my neighbor. Wow. Yeah. That's good. She's connected with a lot of leaders. Everybody will help you in building this business. And just take a decision and make it. All the best. Sure, sir. Sure. Okay, one more name, Shashank. Shashank, I think I cannot trace him. Shashank. Okay, another name, Aman. I will check Aman. Yes, Aman Jaiswal. I have unmuted them. Aman, if you can hear us, आप अपने आप को unmute करके introduce कर सकते हैं. Okay, I think Aman cannot unmute. I will check Shivani Singh again. I have got the message. So Shivani ji, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, you can unmute. Yeah. यस शिवानी Yes, जी, Shivani. आज के सेशन में आपको क्या अच्छा लगा? आप क्यों बिजनेस को बिल्ड करेंगे? Today I learned lots of things through you people. How we have to fit ourselves, and how to awareness to spread the awareness, how to fit others members also, and that I know why we want to fit. I'm a physical trainer, and I know to the Zumba, I know to the aerobics. I'm working in the Pune, and Wow. That's interesting. am I Shivani audible? ji,
Yes, you are audible. Absolutely. That is your passion. Yoga is your passion. Zumba is your passion. And you are a passionpreneur. You can be a passionpreneur. You can be entrepreneur based on your passion. Right? So we'll make it big. And whomsoever has invited you, just sit and discuss and understand the plan in a better way. So all the best. Yeah. Thank you. All right. I will check once again Shashank one more time. No, I cannot find him. So अगर और कोई नए हैं आप चैट बॉक्स में मुझे नाम भेज दीजिए और you can raise your hand. All right, I think no more name. Okay, over to Rima ji. नहीं, मैं रीमा जी से ओवर टू रीमा जी करने से पहले मैं कुछ जरूर बोलूंगी कि अभी जैसे किसी का कुंवर जी का शायद था कि हम लोगों के अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। मैं एक चीज सबको बता दूं, पावर तब आएगा, ठीक है, जब हमारे अंदर वो कुछ करने की चाहत होगी। मैं एक हाउसवाइफ थी, ठीक है, जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, शायद उसी मोमेंट मुझे लगा, उससे पहले मुझे बिल्कुल बात करना, मेरे शादी को अभी 20 इयर्स इस साल होने वाला है, ठीक है, एंड उस टाइम ऑलरेडी 8 इयर्स मैं पूरा घर में थी, ठीक है, बच्चे संभालती थी, खाना बनाती थी, पूरी टिपिकल हाउसवाइफ थी। तो मुझे मेरे अंदर तो कन्विंसिंग पावर था ही नहीं फ्रेंड्स। जैसे श्रीनिवास बताए ना, हमें लर्न करना पड़ता है। मुझे लगा कि अगर मुझे ये सारी चीजें चाहिए लाइफ में, वो फ्रीडम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो छोटे छोटे चीजों से कॉम्प्रोमाइज मुझे करने वाला लाइफ नहीं चाहिए कि मार्केट जाओ और सोचो ये लूं या ना लूं, यार पॉकेट में तो पैसा ही नहीं है, बजट बिगड़ जाएगी, देखते हैं अगले महीने, ठीक है ना, वो सोचना, वो मुझे ज्यादा पिंच होता था। रादर देन मुझे लगा कि अगर मैं ये बिजनेस को मैं लर्न कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ कि कैसे ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं ये बिजनेस में आके सीखी, क्योंकि मुझे जो ये बिजनेस में स्पॉन्सर किए थे वो मुझे बिल्कुल कन्विंस नहीं किए थे। अगर वो कन्विंस करते, क्योंकि हमें कोई चीज के लिए जो कन्विंस करता है ना, हमें लगता है कि इस बंदे से दूर रहना है, नहीं, हमें ओनली बिजनेस प्रेजेंटेशन उनको बताना है कि आप एडिशनल इनकम चाहते हो क्या, ठीक है, जैसे अभी प्रीतेश बताया, आप प्लान बी चाहते हो, हमें जस्ट उनको बताना है, ठीक है, हमें उनको कन्विंस नहीं करना है, नहीं श्रीनिवास जी आप करो, आपको तो करना ही चाहिए, पता है ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो श्रीनिवास शायद भाग जाते हैं वहां से, ठीक है। मैं क्यों किसी को कन्विंस करूं तुम महीने का 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाओ, हम किसी को कन्विंस नहीं करते, हम जस्ट अपना कन्विक्शन को दूसरे को ट्रांसफर करते हैं कि यस दिस इज द बेस्ट बिजनेस, अगर ये बिजनेस को बिल्ड करके हमारी लाइफ चेंज हो सकती है एंड हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है, इतने सारे दुनिया में इतने सारे लोग एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं, अगर उनकी लाइफ चेंज हो सकता है, वो सारे रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट मी, मैं भी कर सकती हूँ। बट यस डेफिनेटली हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि ये नया जमाने का नया बिजनेस है फ्रेंड, ठीक है, इसीलिए बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का किताब पढ़ने के लिए आपको प्रीतेश बताए, एंड हर किसी को ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए कि नया जमाने का नया बिजनेस है क्या। अगर हम कर सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हो, बट क्लॉज यही है कि हम जिस तरीके से किए, अगर उसी तरीके से पैशनेटली आप करेंगे, देन ओवर टू रीमा जी। Thank you so much. Thank you, and thank you for the invitees also, the new invitees, or I really hope that they must have understood the guidelines and the guidance which our mentors have given to us. And I would request everyone to stay with us for a few more minutes. And again, I want to go back to our mentors to listen to us, क्योंकि हम उनको जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ही हमको ऐसा लगता है कम है. So again, I would like to request our mentors for more guidance, for their nuggets, for their guidance, for their inspirational words. So over to you, sir and ma'am, once again. थैंक यू रीमा जी। आई थिंक हमारे पास 5 मिनट्स ही और है, ठीक है, ऑलरेडी 9:55 हो गया है, तो बहुत ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, बट फ्रेंड्स प्लान बी बहुत स्ट्रांगली बिजनेस को बिल्ड करिए, ठीक है, प्लान बी को इतना लाइटली मत लीजिए, प्लान बी जल्द से जल्द बिल्ड करना है, क्योंकि मुझे लगता है शायद परमात्मा 2022 ना हम लोगों को एक मौका दे रहा है कि तू ये 22 में ना तू जो चाहे तो वो कर ले, तुझे इतना फ्रीडम है, हमें पता नहीं 2023 क्या होने वाला है, ठीक है, मैं रियली बताऊं,
हमें नहीं पता। एंड मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत डीप वाइब्रेशन आ रही है कि 2022 हम सबके लिए एक अमेजिंग ईयर है, कि ये साल सब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैं 2021 जब स्टार्ट हो रहा था अपने टीम को मैं यही बताई थी, जो नए लोग हैं शायद नहीं पता होगा, मैं यही बोल रही थी कि ये ईयर 2021 श्रीनिवास एंड शुभश्री के टीम के लिए मैजिकल ईयर होने वाला है, एंड वो हुआ। ठीक है, मुझे वो चीज की स्टार्टिंग से वाइब्रेशन आ रही थी, एंड मुझे इस साल भी यही लग रहा है कि 2022 ना हम लोगों को एक होता है ना कि चल तुझे एक मौका दे ही देता हूँ। ठीक है, 2022 ऐसे ही एक मौका वाला ईयर है फ्रेंड, तो उसको एक एक दिन को ना ऐसे बिल्कुल वेस्ट मत करो। ठीक है, हमें हर चीज के साथ बिजनेस बिल्ड करना है। ये बिजनेस बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगता है, बट आपका 2 से 3 घंटा ईमानदारी के साथ वो 2 to 3 आवर्स आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, उस 2-3 घंटे में आप उसको किस तरीके से आप बिजनेस में दे रहे हो। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग 2-3 घंटा देते हैं, बट हमें उसमें अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे ना, उसमें से शायद हमें कोई रिजल्ट बहुत ज्यादा ऐसा खास हम लोग वो एफर्ट नहीं दिए। ठीक है, बस देना है 2-3 घंटा तो ऐसे दिए। ठीक है, नहीं, हम लोगों को एक्शन में 2 to 3 आवर्स अगर आप डेडिकेटेडली देंगे, देन ये बिजनेस आप बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे फास्ट बिजनेस बिल्ड करने का है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि आप एक न्यू पर्सन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप खुद शेयर नहीं किए। ठीक है, डेप्थ के लिए ये हम तो अपने टीम के लिए कर ही रहे हैं। ठीक है, बट मैं अपने फ्रंट मेरा मेरा अपना मैं आज किसको प्रोस्पेक्टिंग किया, ठीक है, मैं आज किसको ये अपॉर्चुनिटी बताया, जरूर ये होना चाहिए। एंड बहुत सारे आजकल हो गया है, आप लिंक्डइन में सीखो अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट मैं बोलूं जब बाहर जाओगे ना आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ पुराने लोग होंगे, शायद उनको पहले आप बताए थे, शायद उस टाइम में उनका किस्मत में नहीं था, बट हो सकता है अब उनका किस्मत खुल गया होगा, क्या पता। ठीक है, किस्मत लोगों की खुलती रहती है। वो शनि ना एक एक ग्रह से दूसरे ग्रह में वो घूमते रहते हैं, क्या पता उसका शनि चले गए होंगे। ठीक है, जाते जाते कुछ अच्छा फल दे देते हैं, तो हो सकता है दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, तो आप बताओ तो सही। ठीक है, आप अपना एफर्ट तो डालो, फिर से लिस्ट बिल्ड करो। मैं बोलूं हर 6 महीने में ना आप दोबारा से लिस्ट बिल्डिंग का काम जो है, एक बार नहीं कि न्यू बंदा आएगा तो उसके पीछे हम पड़ जाए कि तू लिस्ट बनाए 4 बेसिक का लिस्ट बनाए कि नहीं, ड्रीम लिस्ट बनाए कि नहीं। एवरी 6 मंथ्स हम लोगों को खुद को अपना ड्रीम लिस्ट रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि हर 6 महीने में हमारा प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक तो वो चीज, दूसरी कि मास्टरमाइंड अलायंस। ठीक है, वो जो वर्ड है ना, आप उसको बहुत लाइटली बिल्कुल मत लेना। जब हम अपने जो हमारा मेंटर है, जो हमारा अपलाइन है, जिसके साथ हम लोगों को एक टैग करके हम लोगों को ये बिजनेस में आगे जाना है, उसके साथ आपका एवरी डे का टाइट कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप ग्रीस के लिए जाना चाहते हो। बाकू ऑलरेडी ओवर, बाकू के लिए जो लोग जाना है उनका ऑलरेडी क्वालिफिकेशन स्टार्ट है। ठीक है, वो लास्ट ईयर काम किए थे। ठीक है, उनका मेहनत के हिसाब से वो इस बार बाकू जाएंगे। ग्रीस वही जाएगा जो इस साल ये 8 मंथ्स में वो अपना मेहनत करेगा। बट उसके लिए भी, ग्रीस के लिए आज से बॉल आप लाइन पे आके फेंकोगे वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, इंडिया में तो क्रिकेट का बहुत बड़ा क्या मैंने एक्साइटमेंट रहती है। जब बॉल बॉलर फेंकता है तो थोड़े दूर पीछे जाके वो फेंकता है। तो जो 8 मंथ्स है आपके लिए अगस्त तक, ये है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कितना जल्दी आप टीम बना सकते हो। एंड कोई भी बना सकता है। आज अगर आप बिजनेस में बहुत न्यू हो, 3% भी हो, तो भी आप ड्रीम रख सकते हो कि यस मैं भी क्वालिफिकेशन में आ सकता हूँ। बट यस, एवरी डे मैटर करता है, एवरी आवर मैटर करता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए कि आज मैं किसी को इनवाइट ही नहीं किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, ऐसा कोई दिन जाना ही नहीं चाहिए। अगर जा रहा है देन आप जस्ट वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को। और मैं जैसे बताई, टाइम एक बार चला जाता है ना, वापस नहीं आता है फ्रेंड्स। इसीलिए हर किसी के टाइम को वैल्यू हमें करना है। ठीक है, हमारे ऊपर कोई अगर टाइम दे रहा है उसको सच में दिल से रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो पर्सन अपने बच्चों से, अपने फैमिली से टाइम चुरा के आपके ऊपर दिया है। हमें दूसरों का अगर वैल्यू नहीं होगा तो हमारा वैल्यू कौन करेगा। ठीक है, तो वैल्यू करो दूसरों के टाइम को, आपके मेंटर्स के टाइम को।
ठीक है। एंड अपना टाइम को भी आप वैल्यू करो, ऐसे ही वेस्ट मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ईच एंड एवरी डे काउंट करता है। एंड मास्टरमाइंड अलायंस के साथ हम लोगों को बिजनेस को बहुत रॉक सॉलिड बिल्ड करनी है। एवरी डे आज क्या हुआ, आज ये करना है, आज वो करना है, आज मैं इससे प्लान दिखाया, आज उसके साथ बात करें। कभी कभी होता है कि नहीं हो रहा है यार, क्या करें बताओ, अपलाइन बताओ क्या करें। हो सकता है आपका अपलाइन आपको कुछ ऐसे वाइब्रेशन दे दे, आपको ऐसे कुछ तो बोल, ऐसा होता है कि अक्सर हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता नहीं है क्या करे कैसे करे, और उसी टाइम पे जब अपलाइन से बात करते हैं ना, लगता है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा। और वो सब कुछ हो जाएगा जो माइंड में चलता है ना, सच में बहुत सारी चीजें हो भी जाता है। ठीक है, तो ये बहुत मैजिकल वर्ड है। एंड यही बोलूंगी कि जस्ट फास्ट बिजनेस को बिल्ड करिए। कितने लोग फास्ट करना चाहते हैं रियली? ग्रीस का ट्रिप छोड़ना नहीं है, जाके ही रहना है, सब चाहते हैं। जो प्रीतेश ने बताया ना, आपके कमिटमेंट से पता चल जाता है आप कितना फास्ट करना चाहते हो। होता है ना, जो एक पर्सन मान लो साइकिल चला के जा रहे हैं, तो जब साइकिल चलाता है इधर उधर देख के चलता है कि नहीं, इधर देखता है इधर देखता है, कभी रुक जाता है। और जो बाइक चलाता है उसको कम दिखता है, ठीक है। और जो कार चलाता है, फास्ट ट्रैक में चलता है, उसको कुछ नहीं दिखता है। और जो एरोप्लेन में चलता है उसको तो कुछ ही नहीं दिखता है, डेस्टिनेशन बस दिखता है, बैठ जाता है वो उतरता है वहां पे। इसलिए अगर आप फास्ट ट्रैक कर रहे हो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, आप कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ डेस्टिनेशन दिखेगा। ग्रीस का पिक्चर आपके दिमाग में चलता रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं लेजर लाइट फोकस। नंबर 1 रीजन, अगर फास्ट ट्रैक करना है आपका लेजर फोकस होना चाहिए, मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है। एंड बिजनेस को सेंटर में रखो। ये 2 पॉइंट में पार्टिंग थर्ड दे रहा हूँ। अगर आपको ग्रीस जाना है 100% जा सकते हो, 101% जा सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। जो आज नहीं है फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं, बस 2 चीजें चाहिए, आपका लेजर फोकस ये बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड उसको सेंटर में रखो, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन आपको खा जाएगा। कभी कोविड, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी सिचुएशन आएगा। दैट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। वो नहीं आएगा तो फिर जिंदगी में स्ट्रांग नहीं बनेंगे, आएगा। बट आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो क्या? आप साइकिल चला रहे हो या एरोप्लेन में बैठे हो? आप उससे अपने आप को पूछो, हस्बैंड भाई एक दूसरे को पूछो, हम कौन सी व्हीकल में बैठे हैं अभी? कोई कहेगा हम साइकिल में बैठे, चलो बाइक में बैठ जाते हैं, ठीक है। कोई बाइक में जा रहे थोड़ी कार में बैठ जाए, नहीं, हमें सीधा एरोप्लेन में बैठना है, बिकॉज दिस इज पॉसिबल। हम डे 1 से वही कमिटमेंट लिया, कोई भी ट्रिप नहीं छोड़ना है, 100% सारी ट्रिप अगर आप में रिवार्ड दे रहे तो वी आर देयर। आप खाली ट्रिप को भी अगर फोकस करेंगे ना फ्रेंड्स, खाली ट्रिप को फोकस करो, क्योंकि ट्रिप भी ऐसे ही डिजाइन किया गया है अम्बे का कि आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आप तभी जा सकते हैं। तो अगर ट्रिप को भी फोकस करेंगे ना, तभी भी आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, ठीक है। एक चीज को फोकस करो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, एक बिजनेस ऐसा है ये एम्बे अपॉर्चुनिटी कि एक प्लेटफॉर्म में आप कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज आप बोलो आपको चाहिए, एम्बे बिजनेस में है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एक टीम, आपको नेम फेम चाहिए, आपको अच्छा लगता है आपके बारे में लोग अच्छा बोले, आपको हर चीज ये बिजनेस में मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, आप वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप बोलो तो सही। ऐसे ही अगर खाली ट्रिप को भी फोकस करोगे ना, तो भी आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका पैसा भी हर महीने बढ़ के आएगा, ठीक है। हर चीज आपको मिल जाएगा अगर खाली एक चीज को भी फोकस करेंगे। तो जस्ट फोकस करिए। एंड जस्ट लास्ट को यही बोलूंगी कि मैं यही चाहती हूँ कि कितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, ठीक है। अभी 80 लोग हैं, तो हो सकता है कुछ सिचुएशन के वजह से, हो सकता है नेटवर्क इशू है, कुछ है, तो आप वीडियो नहीं ऑन कर पाए। बट हम लोग अभी प्रीतेश एंड गरिमा को हम दिखा सकते हैं कि यस हम लोग यहाँ पर हैं, एंड आपका प्रेजेंटेशन हम बहुत दिल से सुने, ठीक है। एंड हम जो आप बोले कि दिमाग से लेके दिल तक ये बिजनेस आना चाहिए, डेफिनेटली हम वो जर्नी तय करेंगे पहले कि दिमाग से लेके दिल तक हम बिजनेस को लेके आएंगे। देन 6 to 18 मंथ्स जस्ट हम लोगों को लगेगा प्लैटिनम से, ठीक है। महीने का 1-1.5 लाख जस्ट 6 महीने में हम अर्न कर सकते हैं, बट उस दिन से जब दिल तक आएगा ये बिजनेस, ठीक है। तो कितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं? और जो नहीं ऑन करेंगे, डेफिनेटली मुझे पता है वो लोग यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 स्टार्ट। ओके, देखते हैं।
कितने अमित, आप थोड़ा सा गिनना तो कितने लोग है मीटिंग्स में अभी? मीटिंग में 78 है। ओके, 78 है। एंड कितने लोगों का वीडियो ऑन है? कौन कौन सुने मुझे? 50 के आसपास वीडियो ऑन है। 50 के आसपास वीडियो ऑन है। 1 2 3 4 5 6 7 57 अपर्णा जी, चलो ग्रेट। ठीक है, दैट मीन्स बाकी लोग हमें सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों को ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। ये लोग जब डायमंड बन जाएगी तो इंडिया का सोचो कितना जबरदस्त होने वाला होगा, ठीक है। तो प्राउड ऑफ यू ऑल। विद दिस आई थिंक वी आर डन। बैक टू रीमा जी। And Subhasi जो शॉपिंग कर रही है, she's doing for me because we are all set for Abu Dhabi. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir, for your valuable points. And yes, many things are there which we want to take away. So like small things really matters a lot, and our commitment, our perseverance, and our laser focus. Fine. And we have to keep this business to our center point. So, and this business has to reach from mind to soul. So then only we will be successful. These are the takeaways which our mentors have given to us. And I hope that we all are going to keep this in our mind as well as in our heart, and will build this business and will make our mentors proud too. So next trip with our mentors, that is for definite. This I am committing and giving my promise, and hope that others will also agree with me. So thank you so much once again. Thank you to all the invitees, those who had joined us, and in this on this Sunday, given to us. So here we come to an end, but not the end of this meeting. So very shortly in this coming week, we all will be connected. So thank you so much. Have a lovely night, nice dinner. Thank you.